नगर मैला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए। दर कर महला हस्ती घोड़े। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Harbans Kaur arrived in India earlier this month after the brutal attack on Gurudwara Har Rai Sahib in Afghanistan's capital, Kabul. Not only had she and her husband lived their entire lives in Kabul, their parents, grandparents, and their forefathers had always been citizens of Afghanistan. But on 25th March 2020, around 7:45 am, 4 terrorists stormed into the Kabul Gurudwara where Sikh families had gathered to offer prayers and opened fire. Harbans Kaur was in the congregation along with her 8-year-old granddaughter. For a few seconds, the world stopped. There was blood everywhere. As many as 25 devotees were killed and several others injured. The Islamic State claimed responsibility for the attack, but Harbans Kaur knew that she and her family could no longer stay in Afghanistan. The terror attack had changed their lives permanently. 4 बंदे थे, सारे को कोई भी नहीं। मेरा घर वाला भी सेवादार था, मेरा देव और मेरा घर वाला नीचे जा रहे थे कि जब जो नीचे गए नीचे मारे गए, जो ऊपर गए वो गोलियां लगाई, बम सटे, सारा गुरुद्वारा। मैंने सारे शहीदों को आंखों से देखा। मेरे इधर भी शहीद पाए थे, इधर भी। हमने कुछ नहीं कर सके, पर्दे के पीछे के में रह गए थे। हम ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए, मेरे सर अभी भी दर्द कर रहे। मैं कल मुश्किल से इधर पहुंची हूँ, अभी बैठ भी नहीं सकती हूँ। पूरी रात में जब से हादसा गुजरा 5 महीने रात में सो नहीं रही हूँ, ना सुबह सो रही हूँ ना रात को, ऐसी बैठी रहती हूँ। और रात मस्जिद अपने बंदों में आ गए हैं, मुसलमान नहीं हैं, अपने बंदे हैं सारे। अच्छा लग रहा है, गुरुद्वारे हैं, क्या करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर जब आपने कल आए हैं? डर निकल गया दिल से। हाँ, कल से डर निकल गया दिल से। आपका वापस जाने का? नहीं जाएंगे हम वापस, हमें नहीं जाना अफगानिस्तान। हमें अफगानिस्तान जाना नहीं। और हम ज़्यादा बैठ रहे थे, हमारे सारे बंदे शहीद हो गए, हमारे सारे जवान शहीद हो गए। Afghanistan's small Sikh community began to think of ways of leaving home. Some families decided to sell their lands and live in Gurdwaras in the hope that there would be safety in numbers. Urjita Kaur, 8 months pregnant, was one of those whose family sold their home and began to live in a Gurudwara. And when India last year opened its door to allow minority Hindu, Buddhist and Sikh communities in India's neighborhood to become Indian citizens, Urjita Kaur, like Harbans Kaur, decided to come to India. जी हाँ, मेरे 3 मंथ गुजर चुके थे जब मैं प्रेग्नेंट थी। अभी 5 मंथ और भी हो गए हैं। अभी मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम बहुत ज़्यादा कहूँ वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। उसकी वजह से 2 दिन बाद एक टेंशन हो जाती थी। डॉक्टर के पास जाना पड़ता, वहाँ के डॉक्टर्स भी कोऑपरेट नहीं करते थे हमारे साथ। तो अगर वहाँ पे मेरी डिलीवरी हो जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती, क्योंकि हमारे हस्बैंड की वहाँ दुकान नहीं है, सब कुछ उन्होंने बेच दिया था। पैसों की प्रॉब्लम हो सकती थी उनको, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस अटैक में हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। The Indian embassy in Kabul helped with short-term visas. Soon, permission arrived for 11 members of Sikh families to emigrate. The first batch from Afghanistan arrived in Delhi on 26 July 2020. 2020 में हमें ज़्यादा परेशान करते थे, पठान लोग भी हमें धमकियाँ देते थे। घर पे भी लाइफ भी नहीं थी, हमारी बच्चों की भी पढ़ाई भी नहीं थी। तो हमें देखा हमारे बंदे भी शहीद हो गए, सब 25 बंदे जो आए सब चले गए, बड़े भी चले गए, कोई भी नहीं बचा है। अभी जो अभी इधर आए हमें आए थे, हमारी हिंदुस्तान में सब एक गवर्नमेंट हमारा सोचेगी। हम तो भाई लाइफ हमें ज़ीरो से शुरू करनी होगी कि हमें सब कुछ छोड़ के आए हैं, दुकानें हम छोड़ आए हैं, घर छोड़ आए हैं, सब जिंदगी उधर ही छोड़ आए हैं। हमें कुछ भी नहीं पटाना दम के हम 5 महीने गुरुद्वारे में हाल में रहे हैं, सब बंदे 5 महीने अभी भी हमारे बंदे गुरुद्वारे पे रह रहे हैं, सिक्योरिटी है उधर। तो हमें गुरुद्वारे से बाहर निकलना नहीं होता। 5 महीने हम दुकान नहीं गए, बिना सिक्योरिटी बिल्कुल ज़्यादा नहीं। Sikhism in Afghanistan dates back to the 15th century when Guru Nanak,
the first of the 10 Sikh gurus visited Kabul and laid the foundation of a new religion. Khatri Sikhs settled as traders and made Afghanistan their home. They decided to stay on when thousands of Sikhs in the neighbouring Pakistan left their ancestral lands and moved to India during partition in 1947. Even when the troubles began in the mid-1970s, when Afghanistan's King Zahir Shah was overthrown in 1973, when Soviets invaded Afghanistan in 1979 and decades of civil strife followed, when the Taliban took power in Kabul in 1996 and began to target the minority Sikh community, and several Sikh families decided to move part of their businesses to India. When life became increasingly cheap in recent years and the daily death toll climbed. Life has never been easy in Afghanistan, but it was still home. Gurjita, a 30-year-old Hakim recently arrived from Afghanistan, told us how he had to leave his business that had been established by his ancestors. मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें यहाँ पे सुविधाएं मिलें, हमें अपना घर दिया जाए, हमें अपना काम करने के लिए परमिशन दी जाए, हमें कोई रोक टोक ना हो कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारी लाइफ बने। एक खाने तक नहीं है जो खाना मिलेगा, खाना तो गुरुद्वारे में भी मिल जाएगा, भूखे तो नहीं रहेंगे हम, लेकिन डिपेंड क्या है काम पे ऊपर, जो इन्हें हमारी सुविधाएं बनाएं, हमें कोई परेशानी आगे चल के ना हो, हमारी लाइफ सेटल हो जाए। क्योंकि हम 30 साल की उम्र में कुछ नहीं बना सके उस अफ़गानिस्तान में, इसलिए क्योंकि उधर का कल्चर ठीक नहीं है। अगर उधर का कल्चर ठीक होता तो आज हमें कहीं पे पहुँचे होते। आज इंडिया में आए हम तो यहाँ का कल्चर देख के आए हैं, तो यहाँ के कल्चर के बारे में आपको बताऊँ तो बहुत ऊपर है सोच उनकी। The attack on the Kabul Gurudwara in March this year shook the Afghan Sikh community. They now made multiple appeals to the Indian embassy in Kabul as well as to Home Minister Amit Shah in Delhi seeking immediate evacuation and rescue. Finally, visas were issued. The Delhi Sikh Gurdwara Management Committee arranged tickets and accommodation. The new arrivals would be temporarily housed in Gurdwara Rakabganj Sahib to complete their quarantine period and allow them to think about their future. Still shaken by the memories of terror, some new arrivals spoke bitterly about their lives back home. वहाँ पर जो औरतें थी वो बाहर सामान लेने के लिए नहीं निकलती थी। हमें जो कुछ चाहिए होता था वो हम अपने हस्बैंड को, घर में कोई मर्द होता था उसको भेजते थे लाने के लिए। अगर कोई बाज़ार भी निकल जाए तो वैसे भी हम ऐसे फ्रीडम में नहीं निकल सकते थे, बुर्का करके निकाब करके हम बाहर जाते थे। स्कूल थे मगर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे क्योंकि इतने मुसलमानों के बीच में एक सिख का बच्चा पढ़ना चाहे तो फिर उनको वहाँ पे स्कूल में कभी उनके पटके खोल दे, कभी उनके जूड़े खोल दे, केस खोल दें। इस वजह से भी हम अपने बच्चों को स्कूल, डर की वजह से हम अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं कराते थे। और अब आप कराएंगे? हाँ, यहाँ पे हम बच्चों सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे इतनी खुशी है कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ जाएंगे। But there is more than one Afghan Sikh community in Delhi these days. The first batch had fled Jalalabad in southern Afghanistan after a terror attack in 2018 in which 19 Sikhs were killed. The town's Sikh community had been waiting to meet Afghan President Ashraf Ghani when a suicide bomber blew up the site. The Islamic State claimed responsibility. At the time, several Sikh families uprooted themselves and moved to Delhi. Some started new lives in Tilaknagar, a suburb in West Delhi dominated by the Sikh community. When Manisha Mondal and I visited them, it seemed that several were struggling to make ends meet. हम लोग दिल्ली में नहीं रह सकते, बाहर चले जाओ, इसको बहुत अच्छी बात है। दिल्ली का कुछ भी किसी का नहीं बनता, अफगानिस्तान भी किसी का नहीं बनता। दिल्ली में कुछ जुगाड़ नहीं होता, काम नहीं, आधार कार्ड नहीं, सरदार सब लोग सो भी जाने रहता, किसी का काम नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम कनाडा चले जाएंगे, कोई बाहर चले जाएंगे कि कुछ बच्चे की लाइफ बन जाए। हमारी लाइफ तो नहीं बनी, बच्चे की लाइफ ज़रूर बन जाएगी। आप वैट्स होया ना, इंडिया में अच्छा है, मुल्क अच्छा है, गुरुद्वारे भी है, सब कुछ है, मगर हम खाने पीने के पैसे नॉर्मल तो भी मुश्किल आते हैं। देखो और मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ना पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है कि पढ़ाई करूँ, मुफ्त कोई नहीं पढ़ाएंगे। आप तीनों बच्चों में से कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? फिलहाल तो ऑनलाइन पढ़ाएंगी, लॉकडाउन चलता है। नहीं पढ़ते कितने बच्चे? पढ़ते दो पढ़ते हैं, एक नहीं पढ़ता है, ये भी बेचारा ऑनलाइन पढ़ता है और नहीं पढ़ता है। Back in Afghanistan, the remaining 600 Sikhs
all desperately afraid that the impending withdrawal of NATO forces will make the security situation even worse, are desperate to leave the homes of their ancestors. It seems a third batch will be brought to India soon. मेरा कुछ नहीं बनया है तो उस की क्या खबर कि मेरी हालात को भी उसकी हालात बतौर न हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हालात को भी उसको बतौर न हो जाए। बाय लाइफ हमारी ता नहीं कुछ भी नहीं सुनिया ख़राब हो गया और जेड़े के 90 आते 170 फैमिली या 160 फैमिली 65 फैमिली इसका कुछ बन जाए गुजारा हो जाए। The story of Afghan Sikh community is the story of people with few alternatives but self-exiled. Unsafe and insecure in their ancestral homes, they must leave and go elsewhere to start again. But which one is home? The ones they left behind and will always carry in their hearts? Or their new home in India or another country, far safer but not the same? For ThePrint, this is Urjita Bhardwaj with Manisha Mondal.